the most important factor which is responsible for the success in any fertility treatment is the age of the woman. Namaste, मैं हूं डॉक्टर पुनीत कोचर. आई एम अ फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट एट एलिक्सर फर्टिलिटी सेंटर in Model Town, North Delhi. Today I'll be talking to you about older women with fertility issues. Now, a very common problem that we face these days in our outpatient practice is that women are approaching us with fertility problems in their late 30s, early 40s, or even later. A lot of women are delaying the point of conception, delaying the need for conception to a very late age. The most important factor which is responsible for the success in any fertility treatment is the age of the woman or the age of the mother, age of the egg rather. ऐसा क्यों है ये आज हम समझेंगे. When a girl is born, we are born with a limited number of oocytes. So about 2 million follicles are allotted to any particular girl. और हम अपनी लाइफ में यही एग्स प्रोड्यूस करते हैं. हम नए एग्स नहीं बनाते. हम जो एग्स अपनी पूरी लाइफ में पैदा करेंगे वो हम खुद लेकर पैदा होते हैं. तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, इन एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ग्रेजुअली डिक्रीज होती हैं. द पीक टाइम और द पीक फर्टिलिटी, the time when the fertility is at the highest point in any girl is in their 20s or let's say early 30s at the most. So अगर आप मुझे ये पूछें कि ideal time क्या है कंसीव करने का, ideal time is in your 20s or maybe early 30s. But आजकल 20s में लड़कियां शादी नहीं करना चाहती. I would not say they are wrong. They are educated, they need time to settle down, they need time to establish their career. But what should they be doing? I would suggest start trying for a pregnancy as soon as you can. This can be different for different women, but don't delay it till you're 40 years old. Why? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, आपकी एग्स की क्वांटिटी तो कम होगी ही, साथ साथ में क्वालिटी भी कम होती है. अब इसको असेस कैसे किया जा सकता है? There are certain tests that we can do to determine where you are in your ovarian cycle. आपका ovarian reserve कितना है, आपकी ovaries में जो एग्स हैं वो किस मात्रा में रह गए हैं. A common blood test for this is the AMH or the anti-Mullerian hormone. AMH एक ऐसा टेस्ट है जिससे हमें अंदाज़ा लग सकता है कि आपका ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है, नॉर्मल से नीचे है या थोड़ा ऊपर है, हायर साइड पर है. बट AMH cannot be solely relied on. So apart from AMH, sometimes we do an ultrasound. पीरियड के सेकेंड या थर्ड डे अल्ट्रासाउंड करके इसमें एंट्रल फॉलिकुलर काउंट गिना जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, जिससे अंदाज़ा लगता है कि ओवरीज में कितने एग्स हैं. Also, another hormone called the FSH or the follicle stimulating hormone can be checked on the day 2 or day 3 of your menstrual cycle. इससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आपका ओवेरियन स्टेटस कैसा है. Ideally, we advise that women should try for a pregnancy naturally for a period of 1 year before you start your fertility treatment. ये उन लोगों के लिए है जिनका AMH नॉर्मल है और उनकी एज 35 साल से कम है. अगर आपकी एज 35 साल से ऊपर है या आपका AMH कम है, we normally advise to try naturally only for about 6 months. And then if you are not pregnant, you should start seeking fertility treatment. ट्रीटमेंट भी ज़रूरी नहीं है कि सीधा IVF हो. A lot of women who are older may conceive naturally with the help of some medicines, follicular monitoring, timing intercourse or even an IUI procedure. एक और प्रॉब्लम जो कि ओल्डर वुमेन में पाई जाती है is the problem of decreasing oocyte quality, because of which there is a higher chance of chromosomal abnormalities in the babies. As we see, जब हम IVF cycle करते हैं in a woman who is let's say 30 years old as compared to somebody in a 40 who's 40 years old, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एग्स का नंबर कम होगा. कई बार हम देखते हैं नंबर ठीक होने के बावजूद क्वालिटी अच्छी नहीं होती या क्वालिटी दिखने में ठीक हो. Morphologically the embryo may appear normal, but it still may not implant because it may be carrying certain aneuploidies which are not visible to us under a microscope. इनके लिए क्या किया जा सकता है? So yes, women who are planning pregnancy in their later ages do have the option of undergoing pre-implantation genetic testing, but it is not a very cost-effective option. So in a nutshell, what I would advise
is do not try to delay the point of conception to a very late age. Start as early as you can and seek help from a fertility specialist who will either advise you an appropriate treatment or maybe some medications to improve your oocyte quality, lifestyle changes to preserve your ovarian reserve, egg freezing, and there are so many other options that you can have. Further, if you want any further information about this, please do contact us. Thank you.